इस बार मेरी प्रार्थना सुन लेना भगवान। बोल बालक, क्या इच्छा है तेरी? मैंने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा है, अच्छे क्लासेस दिला दो ना। मिल जाएगा। स्टडी नोट्स भी, वो भी मिल जाएंगे। अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। ये प्रार्थना भी सुन ली। बाबा। हाँ बालक। ये सब एक ही जगह दिला दो ना। तथास्तु, ये भी हो जाएगा। अब तो प्रसन्न है ना? एक आखिरी प्रार्थना, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये सब किफायती दाम में दिला दो ना। ठीक है, बोल बम। हो गया प्राइस कम। अब आकाशवाणी सुन। हे बालक, महाशिवरात्रि के मौके पर सुपर कोचिंग सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए लाया है बोल बम प्राइस कम सेल, जहां पर सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ। Hi, good evening everyone. This is Shefali Singla and in this session we will be talking about binary search tree. इससे पहले भी मैंने binary search tree का concept करवाया था, but seems like there are some issues, some problems. कुछ लोगों को complexity में problem आ रही है. Worst case time complexity क्या होती है binary search tree की? They are facing the problem with that. So again we will be discussing that concept and I'll let you know how the worst case time complexity for the binary search tree is order of n and the best case time complexity is the logarithmic time complexity, that is log n. So बहुत छोटा सा टॉपिक है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इनफैक्ट अगर हम बाइनरी सर्च ट्री के बेसिस पे बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कई बार आपको इन ऑर्डर गिवन नहीं होता है. मैंने पहले भी बताया कि जो बाइनरी सर्च ट्री के एलिमेंट्स हैं, अगर आपसे उनका इन ऑर्डर पूछा जाता है, दैट इज ऑलवेज द असेंडिंग ऑर्डर. Okay, so we will be discussing the concept in this session and इसके basis पे जो questions होंगे बेटा वो आपको पता है कि I'm taking those questions on the master class जो टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म पे होती है, but आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है. All the master classes are free, so easily you can follow those master classes. So without waiting for anything else, let's quickly start with the concept of the binary search tree. तो जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, बाइनरी सर्च ट्री में आपके पास पहले तो टर्म आ रही है बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री होता है व्हेन अ नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं. ये हमें हिंट कहां से मिलता है? टर्म बाय से. बाय मींस 2. तो 2 एरे ट्री, 2 एरे में हमारे पास एक सर्च प्रॉपर्टी आ रही है. दैट मींस कि कुछ रूल डिफाइंड है. रूल क्या डिफाइंड है? that the elements of the left subtree, जो left subtree के elements है वो छोटे होते हैं as compared to the root element and the greater elements are on the right side. इसके लिए बेस्ट एग्जांपल लगता है मुझे कि आप एक बुक ले लीजिए. अब जो बुक में पेजेस होते हैं, जब आप किसी भी पेज को सर्च करते हैं, रेंडमली यू ओपन एनी पेज और उसके बाद आप देखते हैं कि अगर रिक्वायर्ड पेज नंबर छोटा है तो बुक के हम फर्स्ट हाफ के पेजेस को रेफर करते हैं. दैट इज वी गो टू द लेफ्ट साइड. Similarly, if the required page number is greater, then we are going to the right side of the book, that is second half में हम search करते हैं. That means greater elements are on the right side and smaller elements are on the left side. So this is how binary search works. हमारे पास सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च. तो बाइनरी सर्च में हमने यही पढ़ा है कि भाई बाइनरी सर्च आप तभी लगा सकते हो जब आपके पास एलिमेंट सॉर्टेड है. Like the page numbers of the book are sorted. If it's sorted, then on the basis of that, we are going to decide whether we have to consider the first half of the elements or the second half of the elements. So similarly, binary search tree में भी हमारे पास अगर हम general structure की बात करते हैं, in a tree we have a unique node which is known as the root node, and on the left side जो elements है, again they are in the form of the tree structure, but क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्री नहीं है, लेफ्ट साइड पे वॉट एवर आर द एलिमेंट्स, दोज आर द सब पार्ट ऑफ द गिवन ट्री. गिवन ट्री का कुछ पार्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सब ट्री. सो आई एम कॉलिंग दिस एज लेफ्ट सब ट्री क्योंकि ये रूट के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है. सिमिलरली ऑन द राइट साइड ऑफ द रूट वी हैव राइट सब ट्री प्रेजेंट. दिस इज योर राइट सब tree. Root, left subtree and right subtree. So here the search property says that whatever elements are smaller वो कहाँ पे जा रहे हैं? Left side पे. So this means that root is greater than left subtree, और आप ऐसा बोल सकते हैं left subtree elements are smaller than the root.
Similarly, जो right side के elements है, those are greater, right subtree elements are greater than the root. अब मैंने एक प्रॉपर्टी बोली कि असेंडिंग ऑर्डर जो भी बाइनरी सर्च ट्री के एलिमेंट्स है, अगर आप उनका इन ऑर्डर फाइंड करते हैं, दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर. सो वो कैसा है? इन ऑर्डर का मतलब होता है, आई टोल्ड यू दैट ये जो इन, प्री और पोस्ट होते हैं, दिस tells you the position of the root element. So in the in order we have the left subtree elements, क्योंकि left subtree और right subtree का order change नहीं होता है. Left subtree elements, right subtree elements, and then we have the root. This is how you find out in order for any binary tree. So left subtree, right subtree, and in between that we have the root. Now, according to search property, this is the search property. तो search property क्या बोल रही है? What is the relation between the left subtree and the root? That is, it is smaller. So left subtree elements are smaller than root, and root is smaller than the right subtree. So what is this? The elements are coming in the ascending order. Left subtree elements are smaller than the root, root is smaller than the right subtree elements. So here we can conclude one point. Note, in order of binary search tree is, in order of binary search tree is always the ascending order of the elements. Always the ascending, okay, let me write here, ascending order of elements. ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है. So you know that what is in order, what is the property of the binary search tree. So on the basis of that, we have concluded that the in order of elements of binary search tree is always the ascending order. So here I have provided the definition of the binary search tree. Binary search tree is a binary tree in which each node satisfies the search property. Search property says that all the elements of the left subtree of a root are smaller than the root, and all the elements of the right subtree of the root are greater than the root. For example, you can consider this tree. In this tree, 5 is the root element. तो 5 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 4 elements आ रहे हैं. All these 4 elements, 1, 2, 4, 3, all these 4 elements are smaller than 5. Same property आप subtree के हर element पे check करेंगे. Like now in the left subtree, 2 is the root node. 2 is the root node. तो 2 के left पे जो elements होंगे, that will be smaller than 2. Yes, and elements greater than 2 are on the right hand side. Right hand side पे right subtree में 2 elements आ रहे हैं. Both the elements are greater than 2. Similarly, in this subtree, 4 is the root node. 4 के left में जो element है, that is smaller than 4, and right hand side पे there is no element, so that's fine. Same property you'll apply on the right subtree. In the right subtree, रूट इज 6. 6 के लेफ्ट पे कोई एलिमेंट नहीं है, 6 के राइट पे 2 एलिमेंट्स है. राइट सबट्री में 2 एलिमेंट्स आर देयर, बोथ द एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 6, सो इट इज ऑन द these elements are the part of the right subtree. So this way every node of the binary search tree should satisfy the search property. So that's why we are saying that each node should satisfy this property. It's not the case कि कोई एक node के लिए या सिर्फ root node के लिए property is satisfied, so that is fine. No, so it should be satisfied for each and every node of a tree. The way we are looking for the search property, हम root से शुरू कर रहे हैं, and we know that whenever we are going to construct a tree, जब भी हम tree construct करते हैं, it always starts from the root node. क्योंकि जब भी tree grow करेगा, वो कहाँ से grow करेगा? It will start from the root node. So now next thing is basic operations performed on any data structure. So tree की अगर हम बात करते हैं, तो basic operations that can be performed on a tree is insertion and the deletion. Insertion means to add an element to the binary search tree, and deletion means to delete the element from the binary search tree. Here is the point जहाँ पे हम complexity consider करेंगे. So इस चीज को ध्यान से समझिएगा.
बिकॉज बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको 3-4 स्टेटमेंट्स गिवन होती है एंड दे विल से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और फॉल्स, वन एंड द सेम थिंग. सो उस केस में आपको ये पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है. तो let's go through the insertion. So we have said that कि अगर एलिमेंट स्मॉलर है तो उसको लेफ्ट सब ट्री में ले जाओ, राइट है तो राइट सब ट्री में ले जाओ. सो first element, whatever is the first element, that is the root element. So initially tree आपके पास खाली है, so 6 will become the root of the tree. Now this is added. तो बेसिकली जब हम ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, इट लुक्स लाइक वी हैव अ डबली लिंक लिस्ट नोड. डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, वी हैव 2 पॉइंटर एंड 1 डेटा पार्ट. सो हियर द डेटा इज 6, 2 पॉइंटर्स आएंगे, previous और next को point करता है. Here I am taking the pointer as left pointer and the right pointer. Left pointer will be pointing to a node which is a part of the left subtree and right pointer will be pointing to the right subtree. अभी initially हमारे पास कोई node नहीं है, so it will be pointing to null, यानी कि 6 के left में कुछ भी नहीं है, null. 6 के right में भी कुछ नहीं है, so it is also null. जब भी आपके पास कोई भी नोड क्रिएट होती है, इट इज गोइंग टू रिटर्न सम एड्रेस. लेट्स से दैट द एड्रेस ऑफ दिस नोड इज 1000. जब भी आप ट्री पास करते हो फॉर एनी फंक्शन as a parameter, it is not going to pass all the nodes or all the elements of the tree. It is just going to pass the address of the root node. So this is why we have considered the address here. Now I want to insert the next element in the tree that we are constructing. So what we'll do is, first of all, जैसे कोई भी element आता है, using the dynamic memory allocation concept, we will be getting a new node with the data 8. So what I'll do is, I'll create a node with data 8. ये memory में कहीं पे भी create हो जाएगी. For example, this is created at the memory location 1250. This is a node with the data 8. लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर विल बी देयर. लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर, अभी तक सिर्फ हमने नोड क्रिएट करवाई है, कोई लिंक्स क्रिएट नहीं करवाए. सो दिस विल बी पॉइंटिंग टू नल एंड राइट पॉइंटर विल आल्सो बी पॉइंटिंग टू नल. जैसे ही आपके पास कोई भी एलिमेंट आया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट अ नोड. once the node is created, now we have to identify this should be added where. So 8 is greater than 6. That means 8 should be a part of the right subtree. So we'll be updating the right pointer of 6. क्योंकि 6 के right side पे जाना है, so right pointer of 6 will be pointing to a node with data 8. So it will start pointing here. So right pointer will be holding the address of the new node, that is 1250. मेमोरी के अंदर कोई एरोज लिंक्स नहीं बनते हैं, तो बेसिकली रेफरेंस और लिंक्स कैसे प्रोवाइड होते हैं, थ्रू द पॉइंटर्स. सो दैट्स व्हाई हियर वी आर टेकिंग द पॉइंटर field, लेफ्ट पॉइंटर एंड द राइट पॉइंटर. दिस मींस दैट इट इज पॉइंटिंग टू दिस नोड. सो एनी हाउ आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो. अगर बाय एनी चांस आप में से कोई कोडिंग राउंड में जा रहे हैं, तो इफ दे आर आस्किंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ट्री, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्री किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको सिर्फ ये देखना है, एलिमेंट इज ग्रेटर देन 8, सो इट इज गोइंग टू द राइट साइड. टेक द नेक्स्ट एलिमेंट 2. 2 is smaller than 6. That means it has to be a part of the left subtree. Left subtree में अभी तक कोई element नहीं है, so 2 will be the first element of the left subtree. Next element 7. 7 को कंपेयर करवाएंगे, हमेशा कंपैरिजन रूट से स्टार्ट होगा. 7 is greater than 6, so go to the right side. 7 is smaller than 8, so it will be going to the left side. आप कब तक ट्रेवर्स करेंगे, आप तब तक पोजीशंस फाइंड करेंगे जब तक आपको एम्प्टी लोकेशन नहीं मिल जाती. ओके जैसे मैंने 6 के राइट साइड पे देखा, राइट साइड पे ऑलरेडी वन एलिमेंट इज देयर, दैट इज 8. तो 8 के कहाँ पे जाना है, लेफ्ट साइड पे. सो इफ यू सी हियर, here we'll be creating a node with the data 7. data 7 के साथ node create करवाई, and here when initially you are creating a node, this will be pointing, left pointer and right pointer will be pointing to null. So let's say this node is created at the memory address 2000. So we have checked कि इस node को कहाँ पे link करने, right side of 6, right pointer is already pointing to some node. तो उस node के
से कंपेयर करवाएंगे, राइट साइड पे वी आर गेटिंग अ नोट विद द डेटा 8, 7 is smaller than 8, that means 8 के left side पे आएगा, so its left pointer will get updated. Here it will be containing the address 2000, that means it has started pointing here. Okay, so this is how you add the nodes in the tree using doubly linked list. Anyways, next element 4. 4 is smaller than 6, so go to the left side. 4 is greater than 2, go to the right side. तो आप कब तक कंपैरिजन करोगे? जब तक आपको नल पॉइंटर नहीं मिल जाता. 5. 5 is smaller than 6, लेफ्ट साइड, लेफ्ट पॉइंटर इज नॉट एम्प्टी, तो जो भी आपको एलिमेंट मिला उससे कंपेयर करवाएंगे. 5 is greater than 2, go to right side. 5 is greater than 4, go to right side of 4. Next is 3. 3 is smaller than 6, go to left side. 3 is greater than 2, go to right side. 3 is smaller than 4, go to left side. Next element is 1. 1 is smaller than 6, go to left side. 1 is smaller than 2, go to left of 2, that is 1. So this is the resultant binary search tree. So here we have inserted all the elements. So the new value, जो भी आप नई value add कर रहे हो tree में, it will either be inserted into the left subtree or to the right subtree of the root node. By comparing the root node, हर बार आप क्या कर रहे हो? You are comparing the element with the root node and new value we identify, जो भी नई value है we identify कि कौन से subtree में जाएगी, और यही सेम स्टेप्स फॉलो करोगे आप कब तक? जब तक आपको नल पॉइंटर नहीं मिल जाता. So this is how the insertion takes place. Now let's do the analysis of the time complexity. अब ये जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, हाउ मच टाइम इज इट गोइंग टू टेक? दैट मीन्स एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा. लेट्स कंसिडर द बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस. वर्स्ट केस में लेट्स से वी हैव द एलिमेंट्स 10, 20, 30, 40, 50. मैंने 5 एलिमेंट्स लिए. So in order to insert the first element, this is going to take how much time? Initially the tree is empty, 10, then 20 will be here, then 30 will be on the right of 20, 40 is greater than 10, 40 is greater than 20, 40 is greater than 30, so go to the right side, 50. So already in a tree, let us assume n elements are there, 4 elements are already there. I want to insert the next element. How many comparisons are required? 50 को add करने कितने comparisons होंगे? First of all, 50 will be compared with 10, then 50 will be compared with 20, then 50 will be compared with 30, 50 will be compared with 50 will be compared with 40. That means if n elements are already present in the tree, तो हर एक एलिमेंट के साथ कंपैरिजन हो रहा है. दिस मीन्स दैट इन द वर्स्ट केस इट इज गोइंग टू मेक n comparisons. So if already n elements are there, then it is going to make n comparisons. तो इसका मतलब एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए linear time complexity is required, so that is order of n. This is the worst case behavior of the binary search tree. This is worst case scenario. Worst case behavior. वर्स्ट केस बिहेवियर में क्या होता है? सिर्फ एक ही साइड ग्रो कर रही है, ओनली राइट सब ट्री इज ग्रोइंग और ओनली लेफ्ट साइड सब ट्री इज ग्रोइंग. सो सच अ ट्री इज नोन एज स्क्यूड ट्री. दिस इज नोन एज स्क्यूड ट्री. अगर सिर्फ लेफ्ट साइड ग्रो कर रही है तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड ट्री, और अगर सिर्फ राइट साइड ग्रो कर रही है उसको हम बोलते हैं राइट स्क्यूड ट्री. सो व्हेन वी आर गेटिंग द स्क्यूड ट्री, इन दैट केस चाहे इंसर्शन है, चाहे डिलीशन है या सर्च करना है, यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज द लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इसलिए हम बोलते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री का जो वर्स्ट केस बिहेवियर है, in that it is going to take linear time complexity. Best case means kind of your tree is balanced. For example, if we are having the tree like 30, something like 20, 15, sorry, 25, and here I am taking 50. Smaller है, going to left side. Here we have the elements 50, 40, and 60, something like this. This is a binary search tree. Now in this case, I want to insert the element 65. I want to insert
the element 65. 65 कहाँ पे जाएगा? So first of all we need to make the comparison with the root node. So root node is 30. 30 के साथ comparison हुआ. Then 65 is greater than 30. So go to the right side. This is comparison 2. 65 is greater than 50. So go to the right side. 65 is greater than 60. Third comparison. So basically here it is taking 3 comparisons. जबकि इस tree में हमारे पास अभी current scenario में we have 7 elements. Approximately 2 raised to power 3 elements. So अगर 2 raised to power 3 elements है, then it is going to take 3 comparisons. So it depends on the number of levels in a tree, and we know that it is log n. So that is why it is going to take log n time complexity, क्योंकि जितने levels हैं हर level पे एक एक element के साथ comparison हो रहा है, and it is going to take its correct position. So best case में this is taking logarithmic time complexity. I hope that now the complexities are clear, because lot many students were facing the problem with this concept. So best case time complexity for the binary search tree is log n, and the worst case time complexity is order of n. Is this clear? So be it insertion or deletion, अगर आपको element को delete भी करना है, तो first of all anyhow you need to search for the element itself. आप search करोगे कौन से element को delete करना है, तो उसमें भी आपको tree को traverse करना पड़ेगा. कैसे traverse करोगे? By going to the next level and so. Okay, so this is about the insertion. Questions आ सकते हैं, आपको कुछ elements given होंगे and they'll say that how many elements will be there on the left subtree and the right subtree. एक तरीका इसमें a number of nodes find करनी है आपको left subtree में, and we are supposed to find out the number of nodes in the right subtree. तो तरीका क्या है? आप tree construct कर लीजिए, but obviously थोड़ा सा time लगेगा. तो डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं. इफ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री, दैट मींस लेफ्ट सब ट्री में कौन से एलिमेंट्स आएंगे विच आर स्मॉलर देन रूट. लेफ्ट सब ट्री मींस स्मॉलर देन रूट. राइट सब ट्री मींस ग्रेटर देन रूट. तो मुझे ट्री बनाने की जरूरत नहीं है. जो अब रूट एलिमेंट क्या होगा? वॉट एवर इज द फर्स्ट एलिमेंट, दैट विल बी द रूट. In this case, first element of a tree is 50. That means root element will be 50. I'll be getting root as 50. That means you are basically supposed to find out how many elements are smaller than 50 in the given sequence and how many elements are greater than 50. So do I need to construct a tree? Obviously not. So 15 is smaller than 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 elements are smaller than 50. Greater कितने? 1, 2, 3 and 4. So 7 elements are smaller than 50. 7 elements and 4 elements are greater than 50. So what should be the answer? It should be option B. बाकी स्टैंडर्ड अप्रोच आपके पास है ये. We are getting the element 50. आप tree construct कर लीजिए, then count the number of elements in the left subtree and right subtree. That is the normal approach. But exam में हमें correct answer के साथ साथ we have to focus on getting the answer in less time. हमें time भी save करना है. So इस type की आप approaches follow कर सकते हो. So master class में जब हम questions discuss करते हैं, I discuss all the methods, जितने भी तरीके से आप questions solve कर सकते हो. Standard approach क्या होगी? Brute force method क्या है? Then what is the shortcut method to attempt the question so that you can save your time during the exam. So anyhow, 15 is smaller. On the left side, 62 is greater. So on the right side, 5 is smaller. 5 is smaller than 50. 5 is smaller than 15. 20 is greater than 15. Then we are getting 58. 58 is greater and smaller than 62. Then is 91. 91 will be on the right of 62. 3 is smaller. 8 is greater than 5. Then next we have 37. 37 is greater than 20. Then is 60. 60 is smaller than 62 and greater than 58. So 60 will be added here. And 24. 24 is smaller than 50. 24 is greater than 15. 24 is greater than 20.
smaller than 37, 24. Count the number of elements in the left subtree. So here the root node is 50. This is the root node. On the left of 50, we are getting 7 elements, and in the right subtree we are getting 4 elements. This is the right subtree and this is the left subtree. So I won't recommend the standard method क्योंकि unnecessarily आप ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो जबकि जरूरत नहीं थी. सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द रिजल्टेंट ट्री. तो मेनी स्टूडेंट्स आर कंस्ट्रक्टिंग द ट्री आउट ऑफ द गिवन एलिमेंट्स, बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं, देन दे आर फाइंडिंग द इन ऑर्डर. सो व्हाई टू डू दैट? वी हैव डिस्कस्ड वन प्रॉपर्टी दैट द इन ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज ऑलवेज द असेंडिंग ऑर्डर. तो जो भी एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए. सो हियर वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट in order of binary search tree is always an ascending order, is always an ascending order of the elements. So ascending order means 0 to 9. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is option C. कुछ भी नहीं करना था, just you have to find out the ascending order of the elements and you will be done. So we'll be discussing more questions in the master class along with the tricks for sure. All right, next one is deletion of an element from the binary search tree. तो जब आप किसी नोड को डिलीट कर रहे हो, since binary search tree is nothing but this is a binary tree with the search property, and binary tree में हमें पता है किसी भी नोड के 0 child हो सकते हैं, that means it's a leaf node, 1 child or 2 children. That's it. These are the 3 possibilities. तो deletion के लिए हमारे पास 3 cases बनते हैं. You are trying to delete a node which is having 0 child, trying to delete a node which is having 1 child, or third case is you are trying to delete a node which is having 2 children. तो जिस node को delete करना है, I'm calling that node as the node X. Okay, let's consider some tree here. Let's say the root is 50, then we have something like 40. Here we have 45, 48, 47. Here I have the element 28 and something like 35 and 22. Take any elements. 60, 80, 70. This is some binary search tree. First case, I want to delete a node with 0 child. That means कोई भी leaf node ले लीजिए. I want to delete a leaf node. For example, I'm deleting 70. For example, I'm deleting the node 70. So I'm calling this node as X. जिस node को हम delete कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं X. Now, if this is the node X and I want to delete it, तो जो 80 का left pointer है, left pointer of 80 is pointing to 70. अब जब 70 वाली node को आप delete कर देंगे, तो 80 का left pointer किसे point करेगा? Pointing to null. Because when this node gets deleted, तो 80 के left side पे कुछ आएगा ही नहीं. So that means we have to make an adjustment of the parent of X. Parent of X जो node X को point कर रहा था, now it will be pointing to null. मैं सिर्फ directly left pointer इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप किसी node को delete कर रहे हो which is on the right hand side of 80. If this is the node to be deleted, I'm calling this as X. तो इसका मतलब parent of X which is pointing to 85, that will become null. अब यहाँ पे right pointer 85 को point कर रहा था तो right pointer null होगा. अगर left pointer X को point कर रहे तो left pointer null होगा. So in general terms, I'm saying that the parent pointer which is pointing to X, जो parent pointer X को point कर रहा था, now it will start pointing to null and free the node X. अब क्योंकि आप
नोड x को डिलीट कर रहे हैं, सो यू नीड टू ट्रेवर्स थ्रू दिस पाथ. इस पाथ को ट्रेवर्स करना है कहां तक? अप टू पेरेंट ऑफ x. तभी तो आप इसके पेरेंट को डिलीट कर पेरेंट पॉइंटर को एडजस्ट कर पाओगे. सो फॉर दिस एनी हाउ सिंस दिस इज द लिंक लिस्ट, तो आप इसमें रैंडम एक्सेस अप्लाई नहीं कर सकते हो. सो दिस इज गोइंग टू टेक हाउ मच टाइम? इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ अ ट्री. और अभी हमने डिस्कस किया था इंसर्शन के टाइम पे कि वर्स्ट केस में जो ट्री की हाइट है दैट कैन बी अप टू h, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हेन यू आर गेटिंग अ skewed ट्री. Similarly, if it's the balanced tree, then it will be log n. तो हम ये बोल सकते हैं deletion के लिए भी time complexity is order of n in the worst case. So running time complexity for performing the deletion operation is order of n. Big O of n means that is representing the worst case. Moreover, we know that whenever we are returning the time complexity of any algorithm, किसी भी algorithm की जब हम time complexity return करते हैं, we always return the worst case time complexity. This is about case 1 when we are trying to delete a node with 0 child, with 1 child. Let us assume I want to delete a node 45, or I want to delete a node. Okay, let's say we are deleting the node 45. 45 is having 1 child. यहाँ पे child 45 का तो एक ही child है, so or you can say that there is only one possibility, that is one subtree is present. So when I'll be deleting this 45, अगर पेरेंट डिलीट हो गया दैट मींस चाइल्ड को कोई तो चाहिए लिंक करने के लिए. नाउ 45 का राइट पॉइंटर 48 वाले सब ट्री को पॉइंट कर रहा था, बट जब 45 वाली नोड डिलीट हो जाएगी तो इसके पॉइंटर्स भी डिलीट हो जाएंगे. सो द पेरेंट ऑफ 45, जो 45 का पेरेंट था दैट इज 40 का राइट पॉइंटर नोड x को पॉइंट कर रहा था. नाउ इट विल बी स्टार्ट पॉइंटिंग टू द चिल्ड्रन ऑफ x. अगर आप नोड x को डिलीट कर रहे हो, then the parent of node x or the node to be deleted will start pointing to the children of x. कौन से चिल्ड्रन को? एक ही चाइल्ड है, हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. देयर इज ओनली वन चाइल्ड. In this case also you need to traverse the tree till the parent of the node x. So definitely in the worst case that will be taking order of n time complexity. So traverse the tree until reaching the parent node of x. Parent node of x तक क्यों आना है? क्योंकि parent node of x जो x को point कर रहा था अब x के children को point करेगा. So it will now make the parent pointer that is pointing to x, जो x को point कर रहा था. Now it will be start pointing to the child subtree now. आप देख सकते हो जो मैंने ट्री लिया उसमें दो नोड्स हैं, so that's a subtree and free up the node x. ये free up क्यों करवाते हैं? जब हम memory dynamically allocate करवाते हैं, we are using the dynamic memory allocation function, then it's mandatory to release the memory as well. क्योंकि dynamic का मतलब ही ये होता है whenever it is required allocate the memory and whenever it's not required then deallocate it. So again the worst case running time complexity for deleting a node is obviously order of n. Next case, I want to delete a node which is having two children. For example, I want to delete the node 50. मुझे node 50 को delete करना है. Now, in this case, if I'll be deleting the node 50, this is having two children. Who is going to take this position? कौन आएगा parent की position पे? Anyhow, it is this position can be taken by either the element of the left subtree or right subtree, कोई भी आ जाए. But usually what happens is when we are deleting a node with two children, this parent is replaced by, or x, node x will be replaced by either x will be replaced by either in order successor or in order predecessor of x, replaced by in order successor or predecessor of x. इन ऑर्डर फाइंड करना आता है. सक्सेसर का मतलब होता है नेक्स्ट एलिमेंट, प्रीडिसेसर का मतलब होता है प्री मींस पहले प्रीवियस एलिमेंट.
x से पहले इन ऑर्डर में x से पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है, बाद में कौन सा एलिमेंट आ रहा है. सो दैट इज रिटर्निंग द इन ऑर्डर successor or the predecessor. So here replace the node x with in order successor or predecessor. So again, deleting a node with two children is also going to take order of n time complexity, that is linear time complexity. So this is about the basic operations performed on the binary search tree. Insertion and deletion तो हमने देखा कि अगर binary search tree पे आप कोई भी operation perform कर रहे हो, worst case में it is taking linear time complexity, that is order of n, and in the best case it's taking log n. But whenever we are talking about the time complexities, we never consider the best case time complexity, क्योंकि जब भी आप कोई भी algorithm करते हो, we consider the worst case behavior of that algorithm. So next session will be on binary tree construction, very important concept. And next session will be on YouTube. It's on Sunday, but kal Saturday hai, so Saturday ko will be having the master class. As I told you that free classes में दो classes मिल रही हैं आपको. Every day you are having one class. One is on YouTube platform. Free classes YouTube पे चल रही हैं and master class मैंने यहाँ पे लिखा है फ्री. दैट मीन्स कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो मास्टर क्लास है दैट इज ऑन द टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म. So what I'm doing is in the YouTube sessions I'm covering the important concepts. I'll be covering the important concepts, whereas in the master class we will be covering the important set of questions. Important questions. तो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के 5-6 क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो आई विल बी टेकिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टॉपिक बाय टॉपिक. कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे? इफ ऑन यूट्यूब वी आर कवरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ट्री, तो क्वेश्चंस भी बाइनरी ट्री के होंगे. सो व्हाटएवर कॉन्सेप्ट वी हैव कवर्ड ऑन वेडनेसडे, इसके करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस हमने किए थे थर्सडे को. फिर फ्राइडे को यूट्यूब पे सेशन हुआ, जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे सैटरडे को, देन संडे. This Saturday, I'll be taking the questions from binary search tree, as well as this Saturday, that is tomorrow, master class के लिए मैं agenda दे देती हूँ ताकि आप लोग revision कर लें और अकॉर्डिंगली आप मास्टर क्लास में पार्टिसिपेट कर पाए. मजेदार बात ये होती है, मैं क्वेश्चंस यूट्यूब पे ज्यादा क्यों नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज वी डू नॉट हैव द ऑप्शन फॉर द पोल. तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं हमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पे ध्यान देना है, हमें स्पीड पे भी फोकस करना है. तो मास्टर क्लास में हमारे पास पोल का ऑप्शन रहता है एंड एंड पे लीडर बोर्ड पब्लिश कर सकते हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि टोटल कितने क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे, उनमें से आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, कितने करेक्ट आंसर्स थे, एवरेज टाइम क्या था क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का. सो इट्स इजी टू कीप ट्रैक. सो दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग द क्वेश्चंस ऑन द मास्टर क्लासेस. सो कल वाली मास्टर क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री से इजी क्वेश्चन आता है, काफी इजी. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो कोई डिफिकल्टी नहीं है. तो विल बी फोकसिंग ऑन द स्पीड. I'll be taking the questions from binary search tree and theorems और properties के basis पे बहुत questions आते हैं. Binary tree की theorems and properties. Like आपको height दी हुई है, they are asking for the minimum number of nodes, maximum number of nodes, internal nodes दी हुई है, you are supposed to find out the leaf nodes. इंटरनल एंड लीफ नोड्स दी हुई है, आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करनी है, लाइक दैट. तो कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो हमने थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज में कवर किए हुए हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस we will be discussing the questions in tomorrow's master class. So this will be the topic. इन्हीं दो टॉपिक्स में से मैं कल वाली मास्टर क्लास में क्वेश्चंस लूंगी. ओके, so this will be the agenda, and those who want to cover the whole syllabus in detail, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे, क्योंकि ये जो क्लास होती है दिस इज एट 6:30 PM. मंडे एंड ट्यूसडे को क्लास नहीं होती है. 6:30 to 6:30 PM and duration of this session is 30 minutes to 45 minutes. Duration is 30 to 45 minutes. तो ऑब्वियसली बात है कि पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस खत्म करना, वीक में हम 3 सेशंस कर रहे हैं.
concepts के लिए 3 sessions are dedicated and of duration 30 to 45 minutes. So obviously 100% syllabus complete नहीं होगा, but if you want to just revise the important concepts, then it is fine. But if you want to cover the 100% syllabus, so you can join our live batch, that is the super coaching. In the super coaching, we are having 2 sessions every day for paper 2 and paper 1 के लिए एक session होता है. This is the structure of the classes and the super coaching batch. Paper 1 की एक class होती है which is at 12:30 in the noon, and for paper 2 we are having 2 sessions every day, one in the morning, because goal is कि हम May के first week और at max second week तक हमारा syllabus खत्म हो जाए. Morning and evening. Time is for morning it's 7:30 to 9:30 a.m. and for evening it's 8 to 10. For evenings, Monday and Tuesday is off, and for mornings Thursday is off. Saturday and Sunday off नहीं है. Reason is mostly students Saturday और Sunday को free होते हैं, ताकि अगर by any chance आपका weekday में working day में कोई session miss भी हो जाए तो आप recording देख सकते हो सेशन के, और जो भी आपके क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप लाइव सेशन में आके पूछ सकते हैं. सो बट फॉर पेपर 1 इट्स संडे ऑफ. मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, संडे इज ऑफ, बट फॉर पेपर 2 नो सैटरडे और संडे इज ऑफ. सो दिस इज द स्केड्यूल. डेमो सेशन देखना है किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं, what all things are there in the super coaching. For that you can follow the link which is given in the description box. आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी. अगर फिर भी आपको लगता है कुछ डाउट है, क्वेरी है, then you can follow the link of the telegram group, that is our official telegram group. आप अपनी queries पूछ सकते हैं and definitely you'll get the response for that. So this is all about this session. I'll see you guys tomorrow in the master class which will be at 6:30 p.m. 6:30 पे हमारी master class होगी, and you can join that. And those who are interested in the super coaching, guys, today is the sale going on जिसमें आपको up to 90% का discount मिलेगा. This will include the live series, live sessions होंगे, test series included है, questions included है. And sale का benefit लेने के लिए definitely you need to apply the coupon code for getting the discount is Shefali S, SHEFALI S. So you can make use of this code. And let me tell you, in the evening session we are going to finish with the operating system. So today is the last session. Definitely 8 p.m. पे class है, so 8 p.m. पे we'll finish that. That means from tomorrow onwards we are going to start with the next unit. नया unit start हो रहा है, and we'll be starting with operating system. खत्म हो रहा है आज. कल से हम लोग start कर रहे हैं software engineering. So those who are interested in joining the super coaching batch, so this is the good time, because आप नए subject से start करोगे तो it will be easy for you guys to cope up with from the new subject. Morning में हम लोगों ने अभी recently we have started with the new subject, so एक ही session हुआ है DBMS के ऊपर. So morning में DBMS चल रहा है, evening में we'll be starting with software engineering. So those who want to join, so this is the right time, क्योंकि ये भी अपना first session हुआ है तो बहुत ज़्यादा concepts नहीं हुए हैं. Easily आपका पूरा subject scratch से follow हो जाएगा. And for software engineering we'll be starting it from tomorrow. So it's the good time. Currently sale भी है, नए subject भी शुरू हो रहे हैं, तो entry मारने का बिल्कुल सही time है. Okay. So this is all from my side for this session. Thank you so much, guys. I'll see you tomorrow. Take care. Bye bye.